हेलो दोस्तों, वेलकम टू महक प्रेप अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करी हुई है ना, राइट। और जो हमने आपको बोला था टेलीग्राम पर कि हमने 300 MCQs प्रिपेयर करे हैं, जिसमें से हमारे 200 MCQs हो चुके हैं और आज सिर्फ 100 MCQs रह गए हैं, जो कि आज हो जाएंगे कंप्लीट। और आपको साइड बाय साइड आपको टेलीग्राम पे सारा कुछ मिलता जा रहा है PDF आंसर्स के साथ। अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ वो आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे सभी के रिप्लाई मिलेंगे। आप देख भी सकते हो कि हम करते हैं रिप्लाई। हाँ, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट हम ज़रूर करेंगे रिप्लाई भी। सो आज का जो मॉक टेस्ट है वो पहले बता दूँ। जो 4th मॉक टेस्ट था वो था आपका न्यूमेरिकल, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से न्यूमेरिकल थे। और जो आज का मॉक टेस्ट है वो थ्योरी बेसिस पर है, मोस्टली सारा नहीं, कुछ कुछ पार्ट जो है थ्योरी पे है, मतलब मोर देन 50% वी कैन से कि थ्योरी पे है। सो शुरू करते हैं। मोड ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, मीडियम OMR शीट है, ड्यूरेशन 2 आवर्स की है एंड टोटल 100 मार्क्स का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 100 मार्क्स के हैं। अदरवाइज आपका पेपर जूनियर ऑडिटर का है वो 120 मार्क्स का होगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद कैश ओनली, शेयर कैपिटल ओनली, चेंजेस इन कैपिटल बोथ कैश एंड बैंक। 202 फंड इज इक्वल टू कैश ओनली, वर्किंग कैपिटल रिजर्व्स ओनली, कैश एंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस वर्किंग कैपिटल। इसमें से कौन से कैपिटल वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन कैश, डेटर्स कलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है करंट एसेट्स दिए हैं, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, क्लोजिंग करंट एसेट्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। और इसमें हमने क्या बताना है आपको कि वर्किंग कैपिटल चेंज बताना है कितना है। सो हमारा ए ऑप्शन है 50,000 इंक्रीज, डिक्रीज 50,000, इंक्रीज 1 लाख, डिक्रीज 1 लाख। अगला, इंक्रीज इन स्टॉक विल बी शोन एज। इंक्रीज इन स्टॉक को क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नो इफेक्ट, इक्विटी इंक्रीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एडेड टू बैक टू नेट प्रॉफिट वाइल प्रिपेयरिंग और वाइल एडजस्टिंग P&L अकाउंट। कौन सा होगा उसमें से। सो डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹3 लाख, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ₹40,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000, प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कितने होंगे, 2,80,000, 3,60,000, 3,20,000 एंड 4,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फंड फ्लो का ही है, सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू जिसकी 60,000 है, हमने 75,000 पे उसको सेल किया है, रिजल्ट सेल। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड 70,000, सोर्स ऑफ फंड 15,000, नो फंड्स अफेक्टेड। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स। फंड फ्लो क्या रिकॉर्ड करता है, रूटीन ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल नेचर ओनली, रेवेन्यू नेचर ओनली, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट ₹4 लाख, डेप्रिसिएशन 50,000, इंक्रीज इन डेटर्स 30,000, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 40,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बताओ कितना होगा, 3,60,000, 4,50,000, 3 लाख, 4,20,000, राइट। उसके बाद टैली जो कि इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंटिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, स्लो प्रोसेसिंग, नो एक्यूरेसी, ऑटोमेशन एंड रियल टाइम डाटा, नो ऑडिट पॉसिबल। नेक्स्ट 212, टैली ERP 9 को इम्प्लीमेंट करने का पहला चरण क्या होता है, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, डाटा माइग्रेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नीड एनालिसिस। टैली में रिसीट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F6, F7, F8, F9। टैली में नया लेजर बनाते समय कौन सा ग्रुप कंपलसरी होता है, सन्ड्री डेटर, कैपिटल अकाउंट, प्री डिफाइंड ग्रुप, सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टैली ERP 9, ट्रायल बैलेंस कैनॉट बी ऑटो जनरेटेड, ट्रायल बैलेंस इज जनरेटेड मैनुअली, ट्रायल बैलेंस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। 90,000, 30,000, 40,000, 80,000। अगला,
टैली सॉफ्टवेयर ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इमरजेंसी रिसोर्स प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्या होता है? जीएसटी पेड ऑन परचेज, जीएसटी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जीएसटी चार्ज ऑन सैलरी, जीएसटी पेड ऑन सेल्स। नेक्स्ट, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की टैली में क्या होती है? F6, F7, F8, F9। उसके बाद टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करने पर कौन सी डिटेल कंपलसरी नहीं है? कंपनी नेम, स्टेट, फाइनेंशियल ईयर, मोबाइल नंबर। अगला, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी इज रिप्लेस्ड बाय गुडविल ओनली, मिनॉरिटी इंटरेस्ट ओनली, कॉस्ट ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Minority interest means profit of holding company, share of subsidiary not held by holding company, preference shareholder funds, accumulated profit. उसके बाद if purchase consideration is more than net assets, this leads to capital reserve, goodwill, debenture issue, minority interest. 224, holding acquires 80% shares of subsidiary for ₹12 lakh. Net assets of subsidiary on date of acquisition 14 lakh. Cost of control कितना होगा? 1,20,000 goodwill, 80,000 capital reserve, 3,20,000 goodwill, 40,000 goodwill. उसके बाद सब्सिडरी प्रॉफिट है 5 लाख, होल्डिंग शेयर है 80%, मिनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा? 4 लाख, 1 लाख, 80,000, 55 लाख। अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन मस्ट बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, गुडविल अकाउंट, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, एसेट्स शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, परचेज प्राइस। अगला क्वेश्चन, होल्डिंग एक्वायर्ड 75% ऑफ सब्सिडरी फॉर ₹9 लाख, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ₹10 लाख, प्रॉफिट अर्न 4 लाख, मिनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना कितना होगा? 3,50,000, 2,50,000, 1,50,000, 1 लाख। जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर्स इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 230, if subsidiary makes loss after acquisition, then minor loss will be ignored as adjusted in goodwill only, added to cost of control, deducted from minority interest. Next question, highest accurate method of measuring labor turnover is separation method, replacement method, flux method, average method. उसके बाद वर्कर्स एट बिगिनिंग 100, वर्कर्स एट एंड 120, सेपरेटेड 15, रिक्रूटेड 25। तो फ्लक्स मेथड से बताओ कितने टर्नओवर होगी? 20%, 25%, 36.36%, 35%। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स है, एक्चुअल टाइम 8 आवर्स है, रेट जो है 50 पर आवर है, होलसेल प्लान क्या है 50% की शेयरिंग है। तो टोटल अर्निंग्स कितनी होंगी? इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं फिर से बोलती हूँ, जिसमें ऑप्शन नहीं है वो आप जीमेल से हमारे से वेरीफाई कर लिया करो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। 234, स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम 8 आवर्स, रेट 60 पर आवर, अर्निंग्स कितनी है? 480, 576, 600, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड एज एन नॉर्मल आइडल टाइम? पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, टू किट रिपेयर, टी ब्रेक एंड लंच ब्रेक। नेक्स्ट, एबनॉर्मल टाइम इज ट्रांसफर टू WIP, cost sheet, profit and loss account, wages, control account. Overhead absorption rate, factory overheads है 6 लाख, machine hours 12,000, overhead absorption rate क्या होगा? 40 per hour, 50 per hour, 60 per hour, 70 per hour. Overall under absorption के questions, actual overheads ₹6,50,000 है, absorbed overheads है 6 लाख, this leads to over absorption 50,000, under absorption 50,000, no variance, over absorption 60,000. Next, over absorption of overheads is generally added to cost of sales, transferred to costing P&L account, ignored, carry forward always.
उसके बाद स्पेशल ओवरहेड्स, research and development, packing, machinery, erection are treated as direct material, deferred revenue, capitalized, added to cost asset, office expenses. Next is मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद, वही मैंने बोला था थ्योरी है मोस्टली. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद हिस्टोरिकल डाटा, फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग, टैक्स अवॉइडेंस. Which of the following is not an objective of accounting? Better decision making, planning and control, external reporting, fixing responsibility. अगला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग प्लस टैक्सेशन, ऑडिटिंग प्लस HR. Next, which is not a tool of management accounting? Ratio analysis, cash flow statement, fund flow statement, final accounts of company. ये तो जस्ट मैं एक बार बोल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले. Key limitation of accounting is management accounting is based on estimates, costly, no standardized format, all of above. In decision making, management accounting mainly provides historical data, relevant cost, taxable income, past profit. Which statement is true? Management accounting is mandatory. Financial accounting is optional. Management accounting is for internal users. Financial accounting is for internal users only. Comparison between actual and budgeted performance is known as variance analysis, ratio analysis, trend analysis, common size. Which of the following best describes management accounting? Recording of transactions, historical reporting, forward and decision oriented accounting, only cost calculations. Next, find incorrect statement. Management accounting focus on future. It prepares only final accounts. It helps in decision making used by internal management. Cost accounting mainly deals with cost ascertainment and control, profit planning, tax compliance, share valuation. Which of the following is not a limitation of cost accounting? Based on estimates, high cost, not useful in decision making, complex in nature. And which is not a function of cost accounting? Cost control, fixed price of products, so short true financial position, determine profitability. Okay, cost accounting provides information mainly for shareholders and the government, management only, customers, public. Important. Cost accounting helps in determine price only, determine cost only, fix selling price, control wages, all of above. उसके बाद, which of the following statement is false? Cost accounting and finance accounting are same. Cost accounting estimates product cost. Cost accounting helps in cost control. Cost accounting supports managerial decisions. Which of the following is a classification of cost? Fixed versus variable, capital versus revenue, direct versus indirect, all of above. Cost sheets are generally prepared for financial reporting, internal management, tax filing, credit purposes. Cost accounting is dash in nature, historical only, future oriented only, both historical and future oriented, not comparable. Which of the following benefits is not derived from cost accounting? Fixation of selling price, controlling wastage, compliance with income tax, profit measurement. उसके बाद अगला, underwriting means. Underwriting means क्या होता है? Underwriting means granting full subscription of shares, issuing debentures, issue bonus shares, pay dividend. अगला, underwriter must take shares even if public shares fully subscribes fully. This is conditional, firm, optional, soft. Important. Okay, liability formula. Net liability is equal to gross minus marked minus unmarked. It is a formula used in BRS, amalgamation, underwriting of shares, depreciation. टोटल शेयर्स इशूड 1 लाख, अंडरराइटर ए और बी है जिसके 60% और 40% है. मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 ए की हैं, 20,000 बी की हैं.
नेट लायबिलिटी बतानी है एक ही 30,000 20,000 10,000 40,000. Underwriter commission is paid on net liability, gross liability, total subscribed shares, issued shares. Commission payable to underwriter is recorded as underwriting account debit to bank account, commission account debit to underwriter account, capital reserve account debit to underwriter account, underwriter account debit to commission account. अंडरराइटर एबिलिटी की 20,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ कमीशन पर शेयर. टोटल कम्युनिकेशन बताओ कितनी होगी, सॉरी टोटल कमीशन क्या बोल दिया मैंने, 20,000 40,000 50,000 25,000. Marked application means from shareholders, from public directly, through underwriters agency, through companies directors. उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अंडरराइटर्स ग्रॉस लायबिलिटी है 50,000 शेयर्स. मार्क्ड एप्लीकेशंस दी हुई हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस दी हुई हैं. अंडरराइटर का शेयर बताया हुआ 60%. सो नेट लायबिलिटी बतानी है 20,000 16,000 14,000 10,000. If the entire issue is fully subscribed by public, what is underwriter's liability? 0, 50%, 10% depends on agreement. उसके बाद 271 liquidator's final statement is prepared to compute the goodwill, show application of cash and payment to creditors, prepare balance sheet, pay directors. Next, which liability is paid first in liquidation? Preference shareholders, secured creditors, legal charges and liquidation expenses, equity shareholders. Order of payment: liquidation expenses, preferential creditors, secured creditors, equity shareholders. Important. Next, unsecured creditors are paid before secured creditors, after secured and preferential creditors, before preferential creditors, after equity shareholders. Next question, liquidator gets 2% commission on payment to unsecured creditors. Payment to unsecured creditors 5 lakh, तो remuneration कितना होगा 10,000 15,000 20,000 25,000. उसके बाद assets realized 8 lakh, liquidation expenses 50,000, preferential creditors 1 lakh, unsecured creditors जो है रुपीज़ 5 lakh है. Amounts payable for unsecured creditors 7 lakh 50,000, 6 lakh 50,000, 7 lakh 6 lakh. Liquidator means dash to record payments, journal, cash book, personal ledger, realization account. If assets realized 10 lakh है, payment to liquidator 1 lakh है, preferential creditors 2 lakh है. अमाउंट कितनी लेफ्ट होगी डिबेंचर होल्डर्स के लिए? कैपिटल डेफिशिएंसी और लिक्विडेशन इज चार्ज टू डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ फर्म, शेयर होल्डर्स इक्विटी. अगला, liquidator's remuneration is calculated on amount paid to shareholders, amount realized or paid to creditors, only preferential creditors, only equity shareholder surplus. 21, which is not a part of liquidation, realize assets, pay liabilities, prepare financial balance sheet for next year, distribute surplus to shareholders. In case of deficiency, equity shareholders get full payment, partial payment, nothing, preferential over creditors. 283, sale of asset during liquidation, realization account debit to asset account, bank account debit to realization account, cash account debit to share capital account, profit and loss account debit to realization account. Which statement is true? Liquidator is appointed by shareholders, liquidator prepares P&L account, liquidator pays creditors, liquidator does not deal with cash. Liquidation is also known as absorption, dissolution, internal reconstruction, amalgamation. Cost center is meant for revenue generation, cost control, investment decisions, dividend distribution. Profit center focus on cost only, revenue only, profitability, investment decisions only. Investment center is evaluated on return on investment, cost control, liquidity, tax savings, which is not a part of responsibility accounting. Cost center, revenue center, performance center, investment center. Main objective of responsibility accounting is cost reduction only, fixing individual responsibility, better tax payment, shareholder reporting.
Which is a limitation of financial statements? Based on historical data, no estimation, true future prediction, always reliable. Financial statements mainly show true financial position, are free from adjustment, require analysis for interpretation, predict 100% future earnings. बहुत easy चल रहा है. अगला, which is not a qualitative characteristics for financial statements? Reliability, relevance, understandability, excessive details. When financial statements are compared year-wise, it is called trend analysis, comparative statement, fund flow statement, common size. Which concept says don't participate profits but provide for losses? Materiality, consistency, conservatism, dual expect. Which is the most important function of financial statements? Tax collection, decision making, advertisement, cost reduction. What is a major advantage of financial statements? Based on assumptions, based on audited facts, based on true data, free from errors. Which principle ensures same methods every year? Matching, consistency, prudence, going concern. 2 questions are left. The qualitative characteristics which makes financial information helpful for users: prudence, relevance, money measurement, uniformity. Which is not a user of financial statement? Management, investors, auditor, competitor. So guys, ये थे आपके 300 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपको जो है ये नेक्स्ट वीडियो जो आपको रीजनिंग के मिलेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं पार्ट ए भी कराओ साथ साथ, तो आपको रीजनिंग की वीडियो भी मिलेगी. थैंक यू.